हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 201 एंड आर्टिकल 143 दैट इज एडवाइजरी jurisdiction of Supreme Court and 201 that is a bill reserved for the presidential assent। हाल ही में प्रेसिडेंट मुर्मू ने 14 क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रिपेयर की फॉर सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर एंड गिव ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट। These 14 questions indicating about the deemed assents and the time framed by the court to pass the bill by the governor and judicial order to dictate president। क्या कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 के अंतर्गत गवर्नर की पावर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? These are the questions asked by the President from the Supreme Court. President asked the apex court advisory jurisdiction after the judgment of Supreme Court bench, a case filed by the Tamil Nadu government challenging a delay in the clearing 10 repassed bill and his subsequent action to reserve them for consideration by the President। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था that governor action is illegal and lead to default cancellation to the assent of 10 bills, out of which one bill is assent by him and 7 rejected and the other 2 are not considered by him। आर्टिकल 201 के संदर्भ में कोर्ट ने क्लेरिफाई किया देयर इज अ नो वीटो एन एब्सोल्यूट वीटो टू द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन टू assent the bill that it cannot be extended for indefinite period। सुप्रीम कोर्ट के पास jurisdiction है to ask the presidential reference if the question of the public importance। क्या एडवाइजरी jurisdiction सभी कोर्ट पर लागू होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि एडवाइजरी jurisdiction सभी कोर्ट पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि these are not a law and or decree which can be imposed other। If Supreme Court is bound to answer the reference, it is a depend on the discretion of the Supreme Court। If the question is of nature of public importance, Supreme Court will answer the reference। Another question arises that Supreme Court's decision is binding on the President. No, it is not binding on the President because it is not law. It is only advisory. That's why it is not binding on the President। In short, we can say that the question raised by the President Murmu and the deliberation of Supreme Court will shape the understanding of executive power when the outcome come। Do like and subscribe the channel।